Hello and welcome to this National Sports Day special with somebody very special. I mean, you don't find people who are equally good at several levels. As a player, as a commentator, as someone who's doing some fantastic work on his own YouTube platform, opens up his mind, has done fantastic work for sport, which he doesn't talk about. Whether it's Khalil, whether it's Deepak Huda, whether it's Swapnil Singh, I don't think you guys know the stories behind the scenes that Irfan Pathan does with players. So it's a celebration of sport. It's a celebration of what sport stands for, and of course, Indian cricket. We will do this in English and Hindi because Irfan is good in both. And as I said, on National Sports Day, this is ultimately a celebration. Irfan, firstly, thank you very much for joining me. I know you've got plenty to do, but welcome to Rev Sports. And first things first, it's 25 days today. आज Yeah. 25 दिन हो रहा है for the England series and that famous Oval Test match. आपने मल्टीपल शोज भी किया है, ट्वीट्स भी किया है, मैंने पढ़ा भी है, देखा भी है. How do you look back? How do you look back to that Mohammad Siraj moment, which will make me feel very good again on the morning of National Sports Day? First of all, thank you so much for having me, Buria bhai. It's a pleasure always to have conversation with you. But you asked the perfect question at the start because it just refreshes our memories. The kind of series India played. Look, if you look at the whole series, India played so much better than England throughout the whole series. The numbers would have been different. If things could have gone our way in terms of catches, in terms of some of the big movements with the batting partnership of, the first game, we had a batting collapses in the both the innings. If that would not have happened, things would have been different. But the way we fought back in Birmingham, the way the whole team actually fought back at the Oval, it was outstanding. One of the best series, especially in Test cricket, I've been part of as a commentary panel, as well as from a point of view where I was watching the last game at my home. I actually called up my son. My son was playing in his room, so I called him up. I said, look at this match, look at this boy Muhammad Siraj. He didn't had any facility, just like your father when he was growing up. His father, Muhammad Siraj's father, was a auto rickshaw driver. And that journey from there to where he has finished now here, he has not finished, but where he has reached, Come. it is the journey of, lifetime inspiration. He has given so much inspiration to all the youngsters, wherever they are, doesn't matter. Top tier city, two tier cities, doesn't matter where they are in the village. When you see Mama Siraj bowling, the last day, that kind of spell, 145 speed, you get inspired with his whole journey, but sheer determination to not to think about anything else, but to make sure to win the game for the country. That's what he did because the guy who started his speed on the first day of the test series with 135, but finishing the fifth day test match on the five test series on the fifth day, he's bowling at 145. That is, if you ask anyone, how is that even possible? So it shows the kind of effort and it's kind of heart he has for himself, for his team, and for his country. I think it was the one of the best series we have played. इरफान भाई, he was on the show 2 days back. Yeah, And मैं उससे पूछा कि यार आप and at the end of the match he presented me his jersey because उसके yeah, साथ मेरा बात हुआ था in yeah, Manchester. He came up to me and said ये मैच जिता के yeah. आपको जर्सी दे रहा हूँ. हाँ दे देंगे. So then ओवल में मैंने बोला क्या हुआ. So he said नहीं वो मैच नहीं जीता था, इस मैच जीता के आपको दूंगा. So then he presented the jersey to me. So मैंने उसको पूछा कि यार मुझे ये बताओ, अभी आपने जो कहा कि पांचवा टेस्ट आप फिर भी 187 ओवर फिर भी आप जा रहे हो. इसे नहीं दादा देखो, अगर एक और टेस्ट मैच हो जाता ना तो मैं फिर भी डाल देता, 1 घंटा और मैच होता तो मैं डाल देता. ये इंडिया के लिए आप देखो अंदर से आ जाता है. Yeah. आई थिंक दिस होल इंडिया के लिए आ जाता है. हम लोग वर्कलोड मैनेजमेंट के बारे में बात करते Mm, हैं, बट टू सी दिस गाय बोल 187 ओवर्स as a yeah. bowler yourself, as a Mm. top bowler yourself, how do you look at that? But I think, once you there, it's like a war. When you're playing for India, when you're playing for your team as well. See, मैं हमेशा ये बात नहीं करता. देखो, जब आप एक टीम में खेलते हो ना, सबसे पहले आपकी जिम्मेदारी अपने टीम मेंबर्स के लिए है.
बाकी सब चीजें आती है। देखिए कंट्री को तो होता ही है, कंट्री तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट है, लेकिन आपकी बड़ी जिम्मेदारी आपकी टीममेट्स के लिए आती है कि यू कांट लेट योर टीममेट्स डाउन। अगर आप बहुत ज्यादा वर्कलोड के बारे में सोचते हो जब मैच चल रहा है, जब सीरीज ऑन है, तो क्या होता है ना कि चीजें मैनेज करना बड़ा मुश्किल है, लीडरशिप ग्रुप को, कोचेस हो, कैप्टन हो, और प्रेशर दूसरे वाले बंदे पे भी बहुत आता है। सी, मैंने बहुत बातें की है और बहुत सारी चीजें जिस तरह से लोगों को लेनी चाहिए वो शायद दूसरे तरीके से लिए, लेकिन हमारे लिए एक्स क्रिकेटर्स हो, आज इंडिया अच्छा खेलता है तो हमें बड़ा अच्छा लगता है। वी फील सो प्राउड, वी फील दैट India should win. Obviously, we understand that you can't win every time. We never won every time. No one can win every time. But the right thing has to be done every time. And what is the right thing? Once you go on the field, you have to think the way Mohammad Siraj is thinking. I'm not saying no one else not thinking like that. Everyone thinks like that, but some has different criteria in terms of mindset, and some has some other mindset for whatever reason. Maybe because of the past injury, maybe because of the body doesn't work in a similar manner. But what happens to the team? If the body works differently, what happens to the team? It doesn't work, it doesn't give you the proper result the way you want it. So that is why when you play for the country and when you're there in that particular series, you can't think about workload too much. Yes, look, I know the cricket is too much. There you play throughout the whole year, but there are gaps as well. There are series you miss. There are series throughout the whole year you can miss. With a lower level in terms of ICC rank and lower level teams, you can miss matches. You do miss matches. ऐसा नहीं है कि आप पूरे साल खेलते हो, बट जब आप खेलते हो बड़ी सीरीज जैसे इंग्लैंड का सीरीज है, आप मुझे बताइए इंग्लैंड का सीरीज अब कब होगा? 4 साल बाद, उसके पहले तो होगा ही नहीं। और इंग्लैंड के बाद सबसे बड़ा सीरीज कौन सा है? वो तो नेक्स्ट ऑस्ट्रेलिया हो, साउथ अफ्रीका अगर आप 2 टेस्ट ले लेते हो, बट नहीं तो ऑस्ट्रेलिया अब फिर 2 साल बाद 27 में ऑस्ट्रेलिया इंडिया आएंगे। एग्जैक्टली माई पॉइंट, कि अगर इतना वक्त है और वही टाइम है तो आपको पूरी जान लगाना है, जो मोहम्मद सिराज ने लगाई है पूरी जान, और लगाना ही चाहिए। क्योंकि आपकी जिम्मेदारी सिर्फ आपके लिए नहीं है, आपकी जिम्मेदारी आपके टीममेट्स के लिए, आपके कंट्री के लिए। एंड वंस यू आर देयर, यू कैन नॉट, आई पर भाई विल मुझे से दिस एंड ये आई विल बताओ, कीप सेइंग दैट। आप जब बोल रहे हो, मैं ऑब्वियसली जसप्रीत के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, एंड अगेन आई वांट टू पुट दिस ऑन रिकॉर्ड, दिस इज नॉट अ शो फॉर कंट्रोवर्सी, आई एम नॉट इवन बॉदर्ड, आई एम नॉट बॉदर्ड, वी आर टॉकिंग अबाउट द नहीं, इवन वेलफेयर। आई एम नॉट बॉदर्ड। Exactly. No, no, that is why it's very मतलब important to या clarify this for our viewers. We are या not interested. On या National Sports Day, we are both interested in talking about the या welfare of Indian cricket या and the best parts of Indian cricket. Okay, या so don't या impute motive into what Irfan is saying. I'm not या bothered. Neither is he. But Irfan bhai, मुझे ये बताओ, when someone you when you are told, say, by surgeons or medical experts कि देखो यार, your body doesn't hold up or may not hold up, you take the risk, there is Yeah. always that question mark कि your career might be on the line. Mm, How do you mm, react to that? Somebody like a yeah, Bumrah, that if I yeah, play this, maybe I will not be able to last out, maybe I yeah, will break down, what happened to my career? How does yeah. one deal with that? So one thing is that guys like Bumrah, they are very unique. They are like treasure, right? The way, the kind of skill they have. I don't think so. Anyone, like for me, I was the first one to say that the kind of skill he has, this is the best skill we ever had. And you talk about the history of Indian cricket. The guy who can bowl in swing, the guy who can bowl outswing, the guy who can bowl bouncer, the guy who can bowl dipping slow one, the guy he can bowl the Yorker with the new ball. He started with in swing, he started with, he started doing outswing now as well with his beautiful wrist position. And the kind of record he has, outstanding. Now, coming to your question that how difficult it is for a guy, because I had a lot of injuries as well, and how difficult it is for Jasprit Bumrah to actually manage. It is very difficult. And that's why the whole support system is there. If you look at it in the past as well, he was very clear. I was in NCA, I was doing a coaching course for 2 weeks. When he was coming back from the back injury, I could see, his progression was very clear. So he was bowling 5 overs one day. He would take a break next day, and then he would come again, then bowl
6 overs, and then he'll progress is like that. So he's very clear, the team is very clear what to do, what not to do in terms of recovery, and how to bowl, when to bowl, and how much to bowl before you get into the game time, because he took proper process in place. So the process in place, it is in place. What I'm saying, that process is not for during the games to follow. That process cannot be followed in the game. So my point was, when Joe Root came, he bowled the 5 over spell, and generally he bowls the 5 over spell. Joe Root, he has got him out 11 times. Joe Root was very important. I'm talking about the Lord's Test match. And then they had a partnership. Joe Root and Ben Stokes had a partnership. There was very, very important for Captain Shubman Gill that he's number one bowler, bowl one more or two more overs. Because if he does that, there is a high chance for him to get out in front of Jasprit Bumrah, because he has done it before and he can do it again. वो हो सकता था, पॉसिबल है। ये भी हो सकता है कि वो 2 ओवर डाल के नहीं होता, विकेट नहीं मिलता, हो सकता है। बट आपको चांस लेना है, आप वही इसीलिए ना आप। सो माय थिंग वाज दैट कि व्हाई यू डोंट टेक चांस एंड से कि यार मैं 5 ओवर ही डालूंगा। आई टोटली अंडरस्टैंड। सेम गेम में बेन स्टोक्स ने 9 ओवर का स्पेल डाला 5वें दिन। वो तो ऑलराउंडर है, वो तो बैटिंग भी करता है, कैप्टनसी भी करता है, फील्डिंग भी कवर्स पे करता है। बुमराह गोज ऑन द फाइन लेग, सो देयर इज अ रिकवरी इन डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में। और बराबर स्पेस भी दिया जाता है, ऐसा नहीं कि उनको स्पेस नहीं दिया जाता है। और ये भी क्वेश्चन मैं नहीं कर रहा हूं, देयर आर लॉट ऑफ पीपल थिंक दैट आई क्वेश्चन बुमराह's एटीट्यूड। नो भाई, नॉट एट ऑल। Why would I question someone who gives Test cricket the priority, especially after the back injury, where a lot of other guys has not given the priority to Test cricket? I'm not questioning that. I will never question like that. यार इतने भी तो बेवकूफ नहीं है ना कोई। What I'm trying to say, once you are there on the field, you are there. It's like a war. You just go all out. 5 ओवर, 6 ओवर, 7 ओवर, जब ऐसा होगा। सो अभी इंडियन क्रिकेट डिसाइड करता है कि नहीं ठीक है, वी विल मैनेज हिम लाइक दैट ओनली। बट आई कैन टेल यू, आई कैन गारंटी यू दिस, इफ दैट्स गोना कीप हैपनिंग, we will not get the desired result as in Indian cricket what we want for longer period of time. Because what we saying that we are giving importance to our treasure, what we have, like Jasprit Bumrah, we will manage his workload, but जब टाइम आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टाइम आएगा, जैसे मैंने अभी लॉर्ड्स टेस्ट मैच की बात की, तो भी हम वर्कलोड पे मैनेज करेंगे, तो रिजल्ट कहाँ आएगा फिर? मेरा कहने का मतलब यही है। एग्जैक्टली, सो यू वुड पुश इट एट द टाइम व्हेन इट्स नीडेड। बट आप वही स्ट्रक्चर के साथ चलोगे तो फिर दिक्कत होगी टीम के लिए, मैनेज करने के लिए और रिजल्ट के लिए। यार बाय ऑल मीन जसप्रीत बुमराह को सबसे ज्यादा अहमियत, तो नो इश्यूज, और देना भी चाहिए, क्योंकि ऐसा बॉलर आपको नहीं मिलेगा। बट वो होगा वर्कलोड बाद में, रिकवरी होगी बाद में। 2 टेस्ट मैच के बीच में 9 दिन है यार, एक भी दिन उसको ग्राउंड पे मत भेजो, नो प्रॉब्लम, रिकवर करो पूरी तरह से, जिम में जाओ, रिकवरी करो। बट जब आप टेस्ट मैच खेल रहे हो, आपने तो 5 में से 3 टेस्ट मैच खेले, आप उसमें भी अगर स्पेल में इतना ही स्पेल डालोगे तो फिर टीम के लिए बड़ा मुश्किल होगा। उसके बावजूद भी अगर इंडियन क्रिकेट कह रहा है कि हमें ऐसे ही मैनेज करना है, ठीक है भाई करो, लेकिन बात ये आ जाएगी कि आपको डिजायर्ड रिजल्ट जैसे आपको चाहिए वैसा नहीं मिलेगा। ये ऐसे ही है, बिकॉज स्पोर्ट, देखिए स्पोर्ट रियल है, रील नहीं है। आई मीन आपको ऑन द स्पॉट ऐसे क्रिटिकल डिसीजंस लेने पड़ेंगे, एंड दैट यू आर मेकिंग दैट लॉर्ड्स। अगर आप 3 मैच खेल रहे हो तो वो 3 मैच में इन क्रिटिकल सिचुएशंस दैट यू गिव इट मे बी 120% एंड ब्रेक दैट स्ट्रक्चर। पॉइंट टेकन, point taken. You mentioned Shubman Gill ahead of the series, Irfan bhai. I mean, a lot of us, everybody, Shubman Gill, countries batting कर सकता है, नहीं। How impressed were you? He was, in fact, वो 0 for 2 से जो innings उसने खेला, I don't think he gets the credit for that, because KL और उसने जो मैनचेस्टर में बैटिंग की 5 घंटा 6 घंटा एक साथ, 750 runs. How impressed were you with Shubman Gill, the batter? Most impressed. I think he played his best cricket as far as Test cricket is concerned during the tough England series, because it was not easy for him. See, किसी भी प्लेयर के लिए जब वो एक हैट पहनता है ना, जब वो बैट्समैन होता है तो एक ही कैप पहनता है, बट वो उसके साथ कैप्टन बन जाता है तो 2 हैट पहनता है। सो किसी भी खिलाड़ी के लिए अपग्रेडेशन होना ऐसे टाइम पे जब चीजें उसके साथ ऐसी हो रही कि उसके ऊपर और बोझ बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा है, वहां पे इस तरीके के परफॉर्मेंस दिखाना, आई थिंक इट्स एन आउटस्टैंडिंग एफर्ट। उसका किरदार दिखाता है कि उसे जिम्मेदारी पसंद है, ही नोज
कि उसे कि ये जिम्मेदारी के साथ कैसे आगे बढ़ना है, और वो बड़ा जरूरी था इंडियन क्रिकेट की लॉन्जेविटी के लिए। बड़ा जरूरी था कि कैप्टन शुभमन गिल को बैट्समैन शुभमन गिल हेल्प करे। वो किया, ही डिड इट, एंड ही डिड वंडरफुली वेल। और जिस तरह से वो खेला, सी, ऐसा नहीं था कि इंग्लैंड ने अलग अलग प्लानिंग नहीं की उसके साथ, कभी विकेट कीपर को आगे भी लेके आए, Yeah. या बिकॉज ही वाज प्लेइंग इन फ्रंट, राइट, देन ही हैड टू चेंज, ही गॉट आउट इन लॉर्ड्स, बट देन ही केम बैक एंड देन अगेन स्कोर्ड रन। सो द कंसिस्टेंसी इन अगेंस्ट डिफरेंट प्लानिंग वाज आउटस्टैंडिंग. That is what really impressed me. And obviously, the technical aspect I keep talking about during the commentary as well. The way his hand is coming very close to his hip, and that's why he's getting much more time than what he used to before. Because before his hand used to come around. When that happens, you're gonna get late, especially with the in-swing delivery. Now he's worked on it. He's still gonna keep working on it, that particular part, because his bottom end is very strong as well, but at the same time, he's such a great timer of the ball, and he has learned the art of timing the ball even better, especially during this England series. The best thing what I liked about, most of the guys do it, but he was preparing during the IPL for England series with the red ball. It shows the value he has for Indian cricket, and it shows that what he wants to achieve as a leader as well. As a leader, all this, there is this talk about him being all format. How do you see Shubman Gill as a leader? Because he's now vice captain of T20, will be captain in the Hmm. future once Surya's done, maybe after the World Cup, obviously after the World Cup, and Hmm. possibly in the 50-over format as well. I'll ask you that. But how do you see Shubman Gill, the leader, shaping up? या देखो, अगर आप पूरे दुनिया में देखेंगे ना, लीडरशिप में कंटिन्यूटी बड़ी जरूरी है। किसी जगह पे ऐसा नहीं है कि तीन अलग अलग कैप्टन आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। अम, और ऐसा भी नहीं है कि जो सपोर्ट स्टाफ रहता है, जो कोचिंग स्टाफ रहता है। एक एग्जांपल है, साउथ अफ्रीका के सामने आप वनडे खेल रहे, T20 खेल रहे, टेस्ट मैच खेल रहे, ठीक है। अब इमेजिन करिए जो पीछे बैठे लोग, वो कोई भी हो सकता है। सपोज अगर वो राहुल द्रविड़ बैठे हैं या रवि शास्त्री बैठे हैं, हाउ इजी, एंड नाउ गौतम इज देयर, हाउ इजी एंड डिफिकल्ट इट इज टू वर्क विथ थ्री डिफरेंट कैप्टन्स. So I understand what Indian cricket is trying to do now. What they're trying to do now is to have some stability in terms of leadership, because it's a transition period. In terms of leadership, in terms of batting as well, we saw the transition happen in England. So it is very important for Shubman to be there in the leadership group. So what? So I totally agree with that, and I think it's very clear that the message goes loud and clear to every player. See, more than the media, more than the fans, the players needs to know. एक होता है ना कि इंजन है और उसके पीछे ट्रेन के डब्बे हैं। भाई, इंजन कौन है हमारा? वो प्लेयर्स को पता होना बड़ा जरूरी है, वो सिग्नल जाना बड़ा जरूरी है, ताकि एक तरीके से, अब वो ट्रेन का जो फाटक है और स्पीड है, वो इंजन कितना आगे लेके जाता है, वो बात की बात है, लेकिन एक जगह जाना ये बड़ा जरूरी है। अलग अलग जाना ये बड़ा मुश्किल काम है। तो यहाँ पे वो लीडरशिप में स्टेबिलिटी होना, शुभमन गिल, और जिस तरह से उसने कप्तानी की है, और ऐसा तो नहीं कि कप्तानी अभी से कर रहा है, कप्तानी अभी ऑब्वियसली मुझे ये लगता है कि और बेहतर होगा, देयर इज नो डाउट। he Yes. will still learn the art of the leadership, but what he has, एक तो उसके पास बैटिंग की स्टेबिलिटी, सबसे पहले कैप्टन को अपनी पोजीशन स्ट्रांग होना बड़ा जरूरी है। So he has performed. He's been performing in one-day cricket outstandingly well. There is no doubt. Obviously, he's the vice captain there. Now with T20 cricket, before एक साल पहले वो रेगुलर खेल रहा था। अब यहाँ पे ब्रेक था। अब सिलेक्शन में इनका बात हुआ था कि भाई, हमें जैसे ही आप टेस्ट क्रिकेट से फ्री होंगे, आपको हम वापस लेके आएंगे। देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस, आई अंडरस्टैंड, इन द मीडिया, बट इंडियन क्रिकेट सिर्फ जो लोग बात करते हैं वैसा नहीं चलता। एक प्लानिंग के तहत चलता आया है, चलता है और चलता रहेगा। वो जिम्मेदारी सिलेक्टर्स की है, मैनेजमेंट की है, और साथ ही में उनके डिसीजन मेकिंग की है। एंड आई थिंक गोइंग इन वन डायरेक्शन इज इंपॉर्टेंट। दिस इज व्हाट इंडियन क्रिकेट इज डूइंग विद शुभमन गिल राइट।